Okay, here we go. Hello, everyone. We are back after a lag of about 4 weeks. And we'll give you a reason for why we were missing in action for those 4 weeks. And Kiran, this is supposed to be a conversation. So whenever you feel that you need to say something, please chime in, okay? So for the last 4 weeks, I think we had planned that our next podcast would be on trauma, specifically as it relates to the Pakistani region. And once we kind of launched our first episode, the world kind of changed a little bit, and it didn't make sense to just talk about Pakistan when the entire world was hurting so much. और हमें ऐसा भी लग रहा था इस बार हम ACAP गए हुए थे, and ACAP was another reason, and we'll get into it. ACAP is a conference that happens yearly, and it has to do with child psychiatry. So we had a lot of deadlines, and we had a lot of other things that we had to do for ACAP, like presentations and stuff. So life took over. जिंदगी भी थी, फिर ACAP भी थी, फिर the topic didn't make as much sense in the context of the world that we were existing in. हम एक ऐप पे इस पर हमने बड़ी बात की कि व्हाट अबाउट मी, हम में से अक्सर लोगों को होता है जब ट्रॉमा की बात हो रही होती है, जब किसी और चीज़ की बात हो रही होती है, तो हम अपने आप को सेंटर करने की कोशिश करते हैं. तो वी डिडंट वांट टू सेंटर you know Pakistan at a time when it felt that other things were happening as well. But now, I mean, as you had pointed out, Kiran, before we were kind of like online, that there are things in Pakistan that can also be talked about, that need to be discussed, that need to be highlighted as well. So I think now is a good time, and the topic that we had decided will largely talk about the same thing, but kind of open up the context and make it a little bit broader in terms of the context. We were going to talk about trauma, especially as it pertains to the South Asian region, but I think we can just talk about trauma and the impact of trauma. And we talked a little bit about how concretely trauma impacts you, but also in the abstract ways in which trauma kind of impacts you and the loss of potential. We had to record this again, so you will see that we had to record this again because our internets had stopped working. Maybe Kiran's computer stopped working, but we had to record this again. So there's a little bit of a hesitation that you might feel in us because we had already said a lot of things, and now we are having to repeat it because none of us are good editors. So this has to be like one shot kind of, we have to do it in a single take. Anything that you would add? I think no, I think that's what we were talking about, and we wanted to talk about क्योंकि कभी-कभी हम trauma बहुत and while you were saying it earlier too कि जब हम trauma की बात करते हैं, we'll define what trauma is. But just and this is all like what we think basically, and what we've come to learn from our readings and our like training and etc etc. But this is what we think. कि trauma की जब हम बात करते हैं तो trauma आपको बहुत like on a very very microscopic level वो आपको आपके DNA को affect करता है, वो आपको molecular level के ऊपर affect करता है. लेकिन फिर आप zoom out करते हो और हमें नजर तो नहीं आता कि इस बंदे का DNA change हो रहा है या इस बंदे का like इस तरह से gene expression change हो रही है, बट हमें नजर आता है कि इंसान क्या कर रहा है. अब उससे और जूम आउट करते हो तो यू कैन सी कि एक फैमिली किस तरह से अफेक्ट हो रही है वो ट्रॉमा. अब उससे और जूम आउट करोगे तो आपको नजर आएगा कि एक पूरा रीजन, एक पूरा एरिया किस तरह से अफेक्टेड है, एक पूरा पॉपुलेशन किस तरह से अफेक्टेड हो सकती है. आप और जूम आउट करोगे तो आई मीन वन कैन इवन टॉक अबाउट हाउ द वर्ल्ड हैज एक्सपीरियंस सो मच ट्रॉमा एज अ होल, लाइक एवोल्यूशन और इस तरह की सारी बातों में आप लाइक ट्रॉमेटिक इवेंट्स हुए हुए हैं. तो आई थिंक एज यू स्टार्ट जूमिंग आउट you start to see how more like जितना आप zoom out करोगे उतना आपको ज्यादा like history की जरूरत पड़ेगी और उतना आपको ज्यादा समझ आएगा कि trauma से कैसे चीजें affect हुई हैं. और एक और बात जो हम सोच रहे थे करने की, because like Manal said potential की बात, right, like lost potential. तो बहुत दफा जब आप मेडिकल रिसर्च पढ़ते हैं, जो जिस्मानी बीमारियां फिजिकल इलनेसेस होती हैं उनके अंदर there's a concept called years of life lost. बेसिकली कि ये इंसान इतने अरसे तक जिंदा रह सकता था बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड एज, राइट, लाइक यू कैन प्रेडिक्ट हाउ लॉन्ग समबडी इज, लाइक एक पर्सन की आप नहीं कह सकते कि इसकी डेट ऑफ डेथ ही होगी, बट एस्टिमेटेड एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी थी और इस डिजीज की वजह से इतनी शॉर्टन हो जाती है. तो you can talk about years of life lost. You will also talk about like quality of life by living with an illness. But I think what we're also encouraging people or like inviting you to think about and have invited each other to think about is also कि potential loss कितना होता है, कि वो इंसान क्या अचीव कर सकता था, वो इंसान दुनिया में क्या कंट्रीब्यूट कर सकता था, वो एक पूरी and then like earlier were saying कि एक पूरी population क्या कंट्रीब्यूट कर सकती थी दुनिया को as well. That's kind of the lens we're
we're taking. But do you think it's a good time to kind of segue into, like, maybe you can tell what trauma Is means, like what? yeah. Yeah. I think, and then yes, I think first, kind of like, as you had said that, there are definitions of trauma. Like there will be definitions, there will be textbook definitions of trauma. There is a definition that comes along with the PTSD diagnosis in DSM. There is going to be definitions that are used in pop culture. There is going to be definitions that are used in the mainstream society, right? And a lot of times, or sometimes those definitions don't completely overlap. So we have to kind of establish what we are thinking about, how we are thinking about trauma, and what we mean when we say the term trauma in the context of this podcast, right? So you had asked me the question that what do I think about trauma, and I was telling you that, and that roughly this is where the kind of we got cut off a little bit, but I was telling you that, again, as you had pointed out, this is through our training, or this is through the lens that we have developed over years by reading people, right? And one of my lens, and like my lens is heavily influenced by the works of like Judith Herman. And she has written books, and I will recommend those books to our audience as well. She has written one book called Trauma and Recovery, and then she recently wrote another one called Truth and Repair. And my lens is kind of heavily influenced by her work, or work of other, like there are other big names, like The Body Keeps the Score, and there are other big names in the field as well. But so just wanted to say that, and given that, the lens that I often use is that there are two things that kind of come together to create a traumatic experience. One thing is that there is something that is so overwhelming, an event that is so overwhelming, and you kind of elaborated on, it could be from a life-threatening perspective, it could be from a perspective where your dignity or your integrity gets threatened. So there is a traumatic event, or an event that is so overwhelming that happens, and then that meets your faculties being completely overpowered. So you feeling helpless, you're feeling that you don't have enough agency. So आपकी agency compromise हो जाती है, आप feel करते हो कि आप helpless हो, आप उस situation से भाग नहीं सकते हो, आप उस situation से kind of like उसको fight off नहीं कर सकते हो. When those two things come together, an overwhelming event and your senses being completely overpowered, then that combination together creates a traumatic situation. Yeah, and I think yes, that's the definition. Or एक इवेंट भी हो सकता है और इवेंट्स भी हो सकते हैं. सो जब हम ट्रॉमा की बात करते हैं, फिर अगर हम इन द वीड्स जाना शुरू होते हैं, एक्चुअली बिफोर वी गो इनटू द वीड्स, एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, लाइक हम दोनों चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट हैं, तो बच्चों के लिए डेवलपमेंटली जनरली आपके साथ खुद भी हो सकता है ट्रॉमेटिक इवेंट, बट सीइंग अ लव्ड वन लाइक अ पेरेंट और अ केयर गिवर आल्सो गो थ्रू इट, और सिबलिंग गो थ्रू इट, इज आल्सो constitutes trauma, because generally आप that can also constitute a traumatic event for a child. और उसके बाद अगर आप उनकी वीड्स में जाना शुरू करते हैं, तो एक इवेंट भी हो सकता है, फिर ट्रॉमा का इम्पैक्ट इस चीज से भी डिटरमिन हो सकता है कि एक इवेंट था या बहुत सारे इवेंट थे, ट्रॉमा किस तरह से हुआ, उसकी वजह क्या थी, कौन था परपेट्रेटर ऑफ द ट्रॉमेटिक इवेंट, और उसके बाद आपके इर्द गिर्द लोग किस तरह से रिएक्ट किया, लाइक बेसिकली वो बहुत ज्यादा फिर एक डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन बन जाती है. एंड आई थिंक हम इससे एक्चुअली पहले ये बात कर रहे थे टू दैट पॉइंट कि दोनों तरह से सोचा जाता है. मैं थोड़ा रेजिलियंस इज वन ऑफ माय फोकस और वन ऑफ माय इंटरेस्ट के हम रेजिलियंस बिल्डिंग कैसे करते हैं कि इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी के इंसान सरवाइव से आगे थ्राइव कैसे कर सकता है, या इलनेस डेवलप कैसे ना हो. एंड मनाल आपका एक लेंस जो है वो उसी से रिलेटेड बट थोड़ा सा मुख्तलिफ है, विच इज कि हम ट्रॉमा को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं. एंड आई थिंक दोनों कॉन्वर्सेशंस और दोनों डिस्कशंस इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आई गेस व्हेन इट कम्स डाउन टू कुछ काइंड्स ऑफ ट्रॉमा या कुछ काइंड ऑफ लॉस हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, बीइंग लाइक आवर लिमिटेशंस एज ह्यूमन बीइंग्स, हम कुछ प्रिवेंट नहीं कर सकते लॉस, हम डेथ को प्रिवेंट मतलब नेचुरल कॉज डेथ को प्रिवेंट नहीं कर सकते. और कुछ जो है वो कुछ आप प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि सम कॉजेज ऑफ ट्रॉमा आर मैन मेड, या जैसे नेचुरल डिजास्टर को आप कभी कभी प्रिवेंट नहीं कर सकते, ऑल्दो अगर आप क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे तो देयर इज प्रिवेंटेबल या प्रिवेंशन इन इट एज वेल. Yeah, so all those lenses basically combine, like through this lens.
And before we like thank you for bringing that conversation back again, because I had forgotten a little bit about, between the two recordings, because and we should talk about it because they're complementary. But a lot of times I have found that there is a focus on resilience building. And if you look at our literature, because sometimes our literature will have more conversations about resilience building, and we say prevention of trauma either goes into advocacy or policy or something along those lines. Like there isn't as robust or rigorous kind of now there is, like with ACEs and everything, there are conversations about prevention of trauma as well. But still, there isn't sometimes, resilience building kind of takes a central stage. And I have, like, for myself, I have found that to be sort of like a insincere stance if it is not combined with a prevention of trauma, because then you're basically putting the onus on the person who Right, has been right. traumatized to be resilient. And also, And I will just say कि that has been the major criticism, right? Overall, कि अगर आप सिर्फ उस बंदे पर डाल दोगे कि अच्छा तुम्हारे साथ अब ये हुआ है, अब तुम वीक हो क्योंकि तुम resilience नहीं build कर सकते, तो वो गलत है. Like पूरा system has to come together and you have to think about the fact कि trauma हो क्यों रहा है. अगर किसी को illness develop हो गई है, तो that's different than you're living with the perpetrator of that trauma. and then it's also like complacency, right? Like if I focus all my resources on kind of like resiliency building, then I don't have to look at what's causing the trauma. And oftentimes we are the ones causing the trauma, right? So it is also like a little bit of like shifting the focus and then complacency that, oh, पता नहीं कैसे हो जाता है. Like you were saying, बहुत सी चीजें man-made, बहुत सी चीजें natural होती हैं, जैसे death of a parent, right? A lot of times that could be natural, but again, natural ये जो natural disasters होते हैं, natural disasters, इसमें भी हम लोगों की थोड़ी सी climate change का factor है. और हमने क्या पे उस पे बात भी की कि sort of colonial roots of climate change, और उसमें बड़ा बड़ा इंसान का हाथ है. After in 1800s, most of the like the climate change has been kind of like man-made. So yes, then it's like यार उसकी तरफ नहीं देखो ना. Let's make people resilient, kind of. So that is a little bit, but we'll get into it. But starting off, we have established what we mean by a traumatic experience. Which is different, which is a little different from like stress. Yeah, अगर हम child psychiatry की lens से बात करें, तो early life stress is a little bit different than that. That is much broader. That includes like even before your birth, like the pregnancy, the जो आपकी like fetal life थी, जो like stressful events that can happen, वो फिर early life stress के अंदर आ जाते हैं. But trauma एक specific, जब हम trauma की बात करते हैं, तो वो जो आपने जैसे describe किया और उसको define किया, हम वो एक specific चीज है. It's not it's much more what's the word for it? It's not as broad as early life stress. It's much more like specific. जो हम बात करें. Early life stress or adverse events, because there are adverse childhood events as well, right? Which we will probably, you might have heard us already say ACEs. When we say ACEs, or when we will say ACEs in this conversation, it will kind of be about adverse childhood experiences. And even those have the potential to cause trauma. They're not inherently... They stem from trauma. Yeah. So they also have the potential to cause trauma as well. So that's another thing to keep in mind, that when we say trauma, it becomes a little bit more specific. And early life stresses or adverse events have the potential to become traumatic. Some of them are some of them are traumatic. Like they are traumatic. Right. But again, I think from what I've understood, the difference is that, again, they are much broader, and some of them are traumatic inherently, and some have the potential to be traumatizing. Some set the stage for more trauma to happen. Yeah, some set the stage. Yeah. So keeping those things in mind, like incarceration and stuff will set the stage. और उसमें भी broaden किया, क्योंकि पहले वो काफी limited था. Household, like it talked about substance use in the family, it talked about mental illness in the family, it talked about household dysfunction, domestic violence, the household dysfunction में फिर incarceration भी आ जाता है, intimate partner violence भी आ जाता है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, neighborhood violence आ जाता है, community violence आ जाता है. But now they have also kind of like expanded the definition to include like racism and stuff like that, because all of that kind of contributes towards adverse childhood experiences. And I mean,
do a talk on the impact of trauma on childhood development for my uh, where I teach kind of a thing. And one thing that I highlight, and I'm going off on a tangent, is that often what I've come to realize is that, sometimes the bullying that happens in school, and bullying is a huge thing. Like, it's not as kind of like, Pakistan mein, we don't pay as much attention to it, or we are not as attuned to the, but over here, it's kind of like a pretty well described phenomena that exists. And I've come to realize how racialized that bullying is. Like, if you ask the kiddo about what were they being bullied about, there's a racial component to it as well. So just also opening the conversation that racism. मैं भी एक टेंशन जिसके अंदर थ्रो करती हूँ कि मैं भी एक इम्पैक्ट ऑफ ट्रॉमा ऑन ब्रेन डेवलपमेंट लाइक चाइल्डहुड ट्रॉमा ऑन ब्रेन डेवलपमेंट के ऊपर टॉक करती हूँ. इज दैट इट चेंजेस द वे दैट वी लाइक इट एक्चुअली डज ट्रॉमा आपको एक्चुअली ऑन अ बायोलॉजिकल लेवल चेंज करता है द वे दैट आपका जब आप डेवलप कर रहे होते हो और जब आप बड़े हो रहे होते हो आपका ब्रेन भी डेवलप कर रहा होता है. एक्चुअली इट टेक्स इनटू द थर्ड डेकेड ऑफ लाइफ तक आपकी ब्रेन डेवलपमेंट कंप्लीट होती है, which would be the 20s. The first decade is 0 to 10, second decade is 10 to 20, third decade would be 20s to 30s. So it changes the way जो आपकी इमोशन रेगुलेशन, जो आपका ब्रेन का स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम है वो सब डेवलप कर रहा होता है. तो जो सर और जब आप बच्चा डेवलप कर रहा होता है तो आपका ब्रेन जो है वो एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेंट होता है. इट्स एक्सपेक्टिंग एक्सपीरियंस टू शेप इट. Because that's how that's how the kids develop and the brains develop. तो जो experience वो उस वक्त कर रहा होता है अगर उसमें trauma है तो that will shape the way that the brain is developed as well. Or so that's also important to kind of keep in mind. And also sorry एक और because हम ACEs की बात कर रहे हैं तो ACEs like I'm just gonna give a little bit of historical and like just generally medical importance उसकी क्या है is that over time when somebody has gone through adverse childhood experiences, so it's not just कि आपको psychiatric illness होती है. Actually the way it kind of came to light a lot was because you're much more likely to develop physical illness, जिस्मानी बीमारियां, chronic illnesses, दिल की बीमारी, blood pressure, diabetes, cancer, इस तरह की चीजें well into your middle age life. So it, again हम जो पहले going back to what we were saying earlier कि आपको एक biological level पे molecular DNA level पे change करता है trauma. I think we should talk about it. I think before going into like, because in our earlier video we like जो हम record कर रहे थे उसमें we talked a little bit about Pakistan as well, but I think we should talk about so that people know like कि DNA के level पे क्या changes हो रहे हैं, फ्रंटल कॉर्टेक्स के लेवल पे क्या चेंजेस हो रहे हैं, एमिग्डाला के लेवल पे क्या चेंजेस हो रहे हैं, हिप्पोकैम्पस के लेवल पे क्या चेंज, और इनकी इंपॉर्टेंस और इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि फिर हम उसको टाई करेंगे इंडिविजुअल के साथ और फिर हम उसको टाई करेंगे कॉमों के साथ. तो आई थिंक हमें बात करनी चाहिए कि क्या नाम है आपके वो क्या क्या बायोलॉजिकल चेंजेस हैं और उसका इम्पैक्ट बिहेवियर पे किस तरह आता है. We should talk about it. So do you want to start with the DNA thing? Do you want to start? I can start with the DNA. I think it's a good, it's, yeah, since you introduced it, it's... So I mean, you can talk about the, like, okay, so one of the things that happens is like your DNA. So ये बड़ा एक मेरे ख्याल से बहुत से लोग जानते भी होंगे, लेकिन ये क्योंकि it is popularized a little bit in pop culture कि जो आपके जूतों में जो तस्मे होते हैं ना उसके एंड पे एक प्लास्टिक चढ़ा होता है, ठीक है, वो प्लास्टिक उसके एंड्स को बचा के रखता है कि धागे जो है वो खुले ना तस्मों के, क्योंकि अगर वो प्लास्टिक हट जाएगा या वो जो मेटल की चीज आपके तस्मों के एंड पे लगी हुई है, शू लेसेस के एंड पे लगी हुई है, अगर वो उतर जाएगी तो आपके धागे जो हैं वो वल्नरेबल हो जाएंगे. इसी तरह आपके डीएनए पे एंड में एक चीज चढ़ी हुई होती है जिसको हम टीलोमेर्स कहते हैं, जो उसके एंड्स को बचा के रख रही होती है. लेकिन ट्रॉमेटिक इवेंट्स की वजह से उसकी जो लेंथ है, यानी आप समझ लें कि आपके जो जूते के तस्मे पे जो प्लास्टिक चढ़ा हुआ है उसकी लेंथ जो है वो शॉर्टन होती जाती है, वो कटती चली जाती है, वो उसकी लेंथ जो है वो शॉर्टन होती है, जिसकी वजह से आपका डीएनए जो है वो मोर वल्नरेबल हो जाता है, उसके पार्ट्स जो हैं वो मोर एक्सपोज हो जाते हैं, उसकी लेंथ शॉर्टन हो जाती है. अब आप इसको इस लिहाज से भी देख सकते हैं कि जिसका डीएनए इस तरह वो हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी शॉर्टन होगी.
So Mhm. just keeping that lens in mind as well. And I mean, there are other processes with regards to the DNA, the way that DNA is expressed, because there are different ways in which, you know, there are different molecules क्योंकि हमारा पूरा क्योंकि हमारा जो पूरा डीएनए है, सारा का सारा डीएनए वो एक्चुअली वो एक्सप्रेशन सब कुछ एक्सप्रेशन के लिए नहीं बना होता. उसमें बहुत सारा पार्ट है जो एक्चुअली द वे डीएनए वर्क्स इज दैट इट देन गेट्स ट्रांसक्राइब्ड इनटू प्रोटीन और फिर लाइक वो आपकी सेल मशीनरी सारी gears together towards like then हम बायोलॉजी के लेक्चर में चले जाएंगे. सो genetics is that कुछ एक्सप्रेस होता है कुछ एक्सप्रेस नहीं होता. सो देयर आर mechanisms और एक्चुअली one aspect is genes and then हम ट्रॉमा की जब बात करें तो एपिजेनेटिक्स आ जाती है, which is how आपकी environment और कैसे आपकी genetics how to interact together. It's an age old question of like nature versus nurture, but actually there is nature and nurture क्योंकि वो आपकी एक्सप्रेशन को अफेक्ट करती है. तो कुछ जीन्स कभी साइलेंस हो जाते हैं, वो एक्सप्रेस हो ही नहीं पाते कभी भी, और कुछ जीन्स जो नहीं एक्सप्रेस होने चाहिए या नहीं होने थे उस बंदे में, वो इन्वायरमेंट की वजह से, इंटरेक्शन की वजह से वो एक्सपोज होके दे कैन गेट ट्रांसक्राइब्ड इनटू प्रोटीन as well. So मतलब मल्टीपल तरीके हैं बेसिकली. हम बहुत उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं. मल्टीपल तरीके हैं जिससे ट्रॉमा आपको इम्पैक्ट करेगा. डीएनए को चेंज. अभी तो हम सिर्फ डीएनए की बात करें, अभी हम ब्रेन पे आए भी नहीं है. अभी हम सिर्फ डीएनए की बात करेंगे. डीएनए में ये वाले चेंजेस आ जाते हैं. अब ब्रेन की बात, लाइक नाउ लेट्स मूव ऑन. सो जो ब्रेन के अंदर जैसे जब आप लाइक द स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम जो आपका जब डेवलप कर रहा होता है, तो आपका ब्रेन अपना ऑलमोस्ट लाइक अ थर्मोस्टेट सेट भी कर रहा होता है. आपके घर में अगर आप सेंट्रल एयर कंडीशनिंग या हीटिंग की किसी जगह पे रहते हैं, तो एक थर्मोस्टेट हर चीज का सेट होता है कि I'm privileged too. But in other cases as well, right? Like जो आपकी कार का मीटर है, ऑयल, सब कुछ जो है वो उसके ऊपर लिमिटेड इन कार नॉलेज, बट सब चीजों का एक थर्मोस्टेट होता है, राइट? लाइक थर्मो वुड बी टेम्परेचर, बट जो आपका स्ट्रेस का रिस्पॉन्स सिस्टम का थर्मोस्टेट है वो भी सेट होता है. लेकिन वो जीन से लिंक्ड होता है, क्योंकि आपका कितनी आप एक्सप्रेस करोगे, जब कोई हार्मोन रिलीज होता है तो वो कहीं जाके एक रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करता है, तो वो रिसेप्टर कितना एक्सप्रेस होगा, that is also affected as kids are growing older, क्योंकि आपका stress response earlier, you don't have a thermostat, so you will respond to a lot of things. So over time जो आपका stress response का thermostat है वो differently set होगा, तो आपकी reactivity ज्यादा होगी, आप different चीजों में threatened ज्यादा feel कर सकते हैं. ये थोड़ा globally है, but then on a different level जो आपके brain का जो आपका के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं जो develop कर रहे होते हैं different तरीके से. So हमारा brain थोड़ा इंटुइटिवली इस तरह से डेवलप करता है कि जो एरियाज लाइफ फंक्शन और इमोशन, जो लाइफ फंक्शन को मेंटेन करते हैं वो पहले डेवलप होते हैं. जो सब कॉर्टिकल जिनको स्ट्रक्चर्स कहते हैं वो पहले डेवलप होते हैं, और जो कॉर्टिकल या जो थिंग्स दैट, जैसे एक बच्चे को डजंट नीड टू नो हाउ टू पे टैक्सेस, राइट? सो दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट विल हेल्प यू मेक लॉट ऑफ एग्जीक्यूटिव डिसीजंस, वो लेट डेवलप करेगा. जो पार्ट दैट इज इंपॉर्टेंट टू लाइक गेट स्केयर्ड, बिकॉज आई मीन generally all of this wiring is there so that like the goal of the brain is to help you survive, basically. Like you can survive if you don't know how to make a very great executive decision, but it can't survive like अगर कोई threaten होगा तो आपका brain जो है वो फौरन उसको memory में encode कर देगा कि this was a life-threatening event, like we need to be aware of it. So you will react more strongly next time that you feel threatened because you're remembering it, because you want to survive. तो उसमें जो आपके fear center of the brain, जैसे one of the aspects of it is like the amygdala that interacts with जो आपका memory और learning है उसके साथ interact करता है, और almost like जो आपका emotional circuitry है that can in traumatic situations or in very high stress situations can hijack, अगर आप कैसे hijack when the regulation circuitry as well. So like जो higher order basically आपका जो prefrontal cortex होता है, जो दिमाग का आगे वाला हिस्सा होता है, जो सबसे late develop करता है, which is like how do I make decisions, how do I regulate my emotions, how do I plan for things. वो जब आप threatened feel करते हो तो वो it gets hijacked through that ये common language में काफी ज्यादा हम fight flight responses भी कभी-कभी use करते हैं, जो actually rooted in your brain है. Because if you're in a traumatic situation, if you can fight, you want to fight. If you can, like, if you can't, you run away, or you'll flee. Or a third, which is freeze, where it's like you want to minimize damage that is going to happen, that your brain is now anticipating कि अब हम निकलने का कोई तरीका नहीं है. So how do I minimize damage again so that I can survive?
नहीं आपने बहुत अच्छा like I will summarize what you were saying a little bit as well. Like you were saying that a brain is kind of developed bottom up kind of a thing. Mm-hmm. जो household function जो आपके functions हैं वो पहले develop करते हैं, फिर आपका वो वाला brain जो आपके fear को arbiter of fear है या arbiter of kind of like what is rewarding, what is not rewarding kind of a thing वो, and then आपके जो जो context add करता है कि नहीं इतना बुरा नहीं ये let's think about it, it's yeah. not going to be that bad. और देन आपके हायर लेवल ऑफ फंक्शंस डेवलप करते हैं, तो इट डेवलप्स बॉटम अप काइंड ऑफ अ वे। और इसकी बड़ी एक अच्छी एग्जांपल किसी ने दी थी, मेरे ख्याल से ब्रूस पेरी वाज सेइंग इट और समथिंग अलोंग दोस लाइंस, अगेन अ बिग नेम इन द ट्रॉमा वर्ल्ड, दैट बड़ा फर्क पड़ता है कि किस टाइम पे भी ट्रॉमा हो, क्योंकि अगर आपका इस वक्त सिर्फ आपके लाइक लेट्स सपोज वो जो है मेंटेनेंस ऑफ हाउस फंक्शंस वाले जो हैं, जो आपके टेम्परेचर रेगुलेशन या आपकी फीडिंग cycle या वो वाली चीजें सिर्फ डेवलप हुई हैं, उस वक्त ट्रॉमा होता है, या उस ट्रॉमा उस वक्त होता है जब आपका एमिग्डाला वगैरह आ चुका है ऑनलाइन, या उस वक्त होता है जब आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स ऑनलाइन आ चुका होता है। बड़ा फर्क पड़ता है क्योंकि बहुत सी चीजें जो वर्ड्स में कोड नहीं हो पाएंगी वो बॉडी में कोड होंगी, वो इमोशंस में कोड होंगी, वो मेमोरीज में कोड होंगी, वो अफेक्ट, जिसको हम हमारी टर्म में अफेक्ट इज अ डिफरेंट वर्ड, इट मींस बेसिकली हाउ यू एक्सप्रेस इमोशंस काइंड ऑफ अ थिंग। अफेक्ट में कोड होंगी, बहुत सी उस चीज में कोड होंगी। और उसकी उन्होंने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी कि अगर आप एक एम्ब्रियो को टीका लगाओगे तो उसका जो इम्पैक्ट एक एम्ब्रियो पे होगा वो बहुत फर्क होगा कि आप मुझे टीका लगाओ, राइट? अगर आप मुझे टीका लगाते हो, इट्स नॉट गोना इम्पैक्ट मी दैट मच, मे बी छोटी सी अवी होगी लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक एम्ब्रियो को टीका लगाओगे तो वो तो तबाह हो जाएगा, राइट? तो इस तरह बच्चे पे जो इम्पैक्ट होगा वो बड़े पे मुख्तलिफ होगा, क्योंकि हमारे पास लैंग्वेज होती है, हमारे पास एज यू वर सेइंग we can add context, we can add language, and we can do a little bit more of meaning making than the children can. So that was a really good point that you kind of highlighted. The other thing that I also want to highlight is that थोड़ा सा आसान करने के लिए, क्योंकि जब आपने बात की थोड़ा सा मेडिकल टर्म्स ज्यादा यूज हो गई। नहीं आपने मेडिकल टर्म्स इस्तेमाल नहीं किए, मैं उस पे नहीं कह रही, लेकिन जिस तरह just to reiterate, maybe because repetition जो है it also helps kind of consolidate. जो अब आप बात करी थी, हमारे एक सेंटर होता है जो थैलेमस होता है, राइट? एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यू आर द एक्सपर्ट इन न्यूरोसाइंस काइंड ऑफ अ थिंग। नो कम ऑन, लाइक टेक इट, आपकी तारीफ हो रही है, ले न्यूरोसाइंस की आप एक्सपर्ट हैं। तो जब हमारे एक थैलेमस एक हमारा सेंटर होता है जो इनपुट लेता है, जो हर तरफ से इनपुट ले रहा है और फिर उसको भेजता है, ये जिस तरह आप कही थी एमिग्डाला जो हमारा it is a lower order of function. There were some not lower order of function, but serves a different function. And then there's prefrontal cortex, which is kind of like our frontal cortex, which does the executive functioning, right? The road to amygdala is short, and the road to frontal cortex is long. So अगर बार-बार आप एक traumatic situation दे रहे हो, तो ये वाला पाथवे जो है, जिस तरह हम कहते हैं ना, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, तो ये वाला जो पाथवे ये स्ट्रांग होता जा रहा है, स्ट्रांग होता जा रहा है, स्ट्रांग होता जा रहा है। ये वाला जो पाथवे है वो काइंड ऑफ लाइक लूज उधर रखा हुआ है, वो इतना स्ट्रांग नहीं है, तो लिहाजा दैट रिएक्टिविटी विल गेट consolidated over and over and over and over and over again. So next time when a situation happens, you're already on the alert, you're already kind of expecting it, and you're ready to react, which and is why that reactivity and not being able to, okay, slow it down, let's think, let's be more deliberate about it, that kind of gets lost as well. And that is a very important point, because that kind of bleeds into the potential. Right. And I think that to expand it a little bit more, I think that yes, definitely आपका thalamus है जो आपका relay center है between what is happening in your body and what is happening in your brain, and then there's another part of your brain जो फिर आपके subcortical structures को higher order structures से जब relate करता है, या subcortical structures कभी-कभी लोग अगर आपने कुछ like normal पुराने ज़माने में या कुछ लोग उसको reptilian brain या lizard brain भी कहते हैं, क्योंकि वो जो है वो उसमें आपकी एग्जीक्यूटिव फंक्शन वगैरह इन्वॉल्व नहीं है, लाइक थिंग्स दैट मेक अस at the top of the food chain, I guess, in a way, which is a dangerous term to use. We have to change it. We have to change it, yes. But basically like जो आपको like planning और उस तरह की चीजों में
में लेके जाता है. So there's another part that then integrates it. Like Manal was saying that the road is long. So जब amygdala आपका या जब आपका fear center है, वो आपके brain को, आपके higher prefrontal cortex सब जब relate करा, तो बीच में एक और चीज भी है जो integrate करती है, जिसको cingulate cortex, anterior cingulate cortex कहते हैं, जो उसको कहते हैं अच्छा अब ये हुआ है, ये fear आया है, अब मैं इसको आगे भेजूं, how do I make sense of what has happened? And then like different parts of the brain then said अच्छा इसको ये value assign करो, अब अच्छा अगली दफा होगा तो हम ऐसे प्लान करेंगे, अच्छा नहीं इतनी मुख्तलिफ, अगर मैं उठ के इस वक्त चीखूंगा तो it actually is, you know, consequences के बारे में सोचना और कहना कि नहीं नहीं मैं अब ये नहीं करूंगा, ये सब actually बहुत real time में relatively fast होता है, लेकिन the road is a little bit longer. But there's another short road which is that the amygdala, जो आपका एक और part होता है आपके brain का, उसको hippocampus कहते हैं, जो generally like आपकी long term memory store करता है, या आपको like you know like emotional regulation में involved होता है, और जो है वो learning में भी बहुत involved होता है. उसके साथ जो road है ना, वो थोड़ी short होती है. So there's another, so आप जब आप कोई बहुत fearful situation या बहुत traumatic situation encounter करते हो, तो वो directly उसको भी input देता है कि ये याद रखना, ये जो ये हुआ है ना, ये this could have threatened us, this could have like obliterated us. तो आपकी learning वगैरह भी impact होती है उससे, क्योंकि again वो आपका context provision थोड़ा सा advanced level पे होता है, लेकिन आपके brain again आपको survive सबसे पहले करवाना है कि how are we going to make sure that we survive the situation or these situations. और एक और चीज मैं ऐड करूंगी, just to highlight I feel bad about saying the top of the food chain thing. I think I have to find like a different word. I couldn't find a word for it. We'll think about it like in our podcasts, like how do we coexist in our ecosystem without putting ourselves on the top. Right. I think the other thing that what we're saying is not to bore the audiences. We are not trying to bore you, and we're not trying to lecture you, and we're apologetic about how it's kind of becoming that, but we want you to understand the complexity of it all. One thing that I will also add is that जिस तरह आप कहेंगे कि कुछ केमिकल्स जो हैं वो और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स और कुछ हार्मोन्स वगैरह रिलीज भी होते हैं, और वो जाके जो आपके एक्सप्रेशन है, आपके जो रिसेप्टर्स हैं उन पे जाके इम्पैक्ट करते हैं, कितने रिसेप्टर्स एक्सप्रेस हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं, सारा कुछ चेंज होता है. उसमें आपका एक और जो चीज रिलीज होती है, दैट्स योर कॉर्टिसोल, एंड दैट उसी का रिसेप्टर. And you mentioned hippocampus, and it goes back to kind of like, if it's not regular, like there is naturally it should be shut off after that traumatic event has passed, it should be shut off. But if you know you're constantly locked into that fight and flight kind of a thing, it doesn't get shut off, and it goes to your hippocampus and kind of destroys the hippocampus a little bit as well. And again, it's very important to keep that in mind, because that is your center for learning and memory. Agar aap like learning is such an important thing for survival, right? And if that's getting impacted, imagine the loss of potential that comes from not being able to learn or consolidate memories and stuff like that. And another thing that I also wanted to thoda sa isko aur complicate karne ke liye, reward system, aapka ventral tegmental area or ye wala jo reward system, and that also gets impacted, the VTA and things as well. And that is why a lot of times, you know, jo definition of PTSD है उसमें अक्सर ये भी होता है कि not finding joy or not finding like, you know, there's that negative mood or cognition kind of a thing is a part of the, because first it was like, I'm not like, I might be wrong here, but usually मैं जब initially train हो रही थी तो हम 3 चीजें देखते थे: re-experiencing of that traumatic event, उसके अलावा avoidance, and the third thing, so you had a traumatic event, you had the re-experiencing in the form of nightmares and flashbacks and memories and stuff like that. Then you had the avoidance of them, either externally or internally, you were trying to avoid them. And then there was arousal, which was in the form of disturbed sleep and reactivity and stuff like that. And then another thing that got added on, I don't know if it got added on or if I had started paying more attention to it, was mood and negative expressions and mood and thought. So, and that is very important to keep in mind, because rewarding events might not feel as rewarding anymore. Right? And the pursuit of rewarding events might not feel rewarding anymore. And then you might have to create reward through things that like substance use. So that is also another important thing to keep in mind.
is that your reward center also gets impacted. Like it impacts what we're basically trying to say. It impacts your physiology. It impacts your like biology. It impacts your DNA. It impacts the way that you are, not just behaviorally, not just kind of like not just in terms of behaviors, because a lot of times we just think about behaviors, but you have to recognize how the brain is being changed, Right. how everything inside is being kind of like altered, and how Right. then we'll link now we should link it to how potential is lost, Right. or in a person, and then also on the scale of like Yeah, Kwame. and I think this might be a good point for if somebody wants to take a break, right? Because हम थोड़ा long conversation style podcast या ये recording करते हैं अपनी. So if you want to take a break, like this might be a good intermission point to say मैं you have आके next, you you have given up कि हमारा 45 minutes में खत्म, because हमने वादा किया था कि हम 45 minutes में हाँ खत्म. नहीं खत्म हो क्योंकि हम एक मुश्किल बात कर रहे हैं. इट्स अ वेरी हाँ. डिटेल्ड टॉपिक एंड आई थिंक हम उसको जस्टिस नहीं कर सकेंगे अगर हम, लेकिन वी आल्सो हैव टू बी रिस्पेक्टफुल ऑफ एवरीबॉडीज टाइम. तो आई Yeah. थिंक हम एक इंटरमिशन बता देते हैं. Intermission. or you can let it, like, this can marinate in your brain. It's a lot of like depending on Content. how interested you are, you may want to look up कि amygdala कहाँ पर होता है, you may want to look up कि prefrontal cortex कहाँ पे होता है. You already know कहाँ पे होता है. और एसिस स्टडी क्या थी, उसका इसकी आदि आउटकम है, और एसिस को किस तरह रिवाइज किया गया है ओवर टाइम. लाइक यू माइट वांना familiarize yourself. और तो कौन अगर सी आपने books हम सजेस्ट कर रहे थे? राइट और आप जो डाउनस्टेयर्स और अपस्टेयर्स की बात करेंगे, रिमाइंडेड मी ऑफ द होल ब्रेन चाइल्ड जो डैन सीगल की किताब है कि कि जो डाउनस्टेयर्स द ब्रेन कैन आल्सो बी थॉट ऑफ एज डाउनस्टेयर्स एंड अपस्टेयर्स. के डाउनस्टेयर्स में आपका मोर एप्लीकेबल यहाँ पे मतलब होता है. आई थिंक घरों के स्ट्रक्चर्स अगेन ये कल्चरली लाइक डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरह से घर बना हुआ होता है. बट यूजुअली जब वो डाउनस्टेयर्स ब्रेन की बात करता है तो वो कहता है कुछ घरों में, यहाँ पे घरों में कभी नीचे किचन, लिविंग एरिया, गराज, इस तरह की चीजें होती है, या पार्किंग मतलब मेन एंट्रेंस होती है, और फिर सीढ़ियां होती हैं, और ऊपर जाके बेडरूम और आपका स्टडी और इस तरह की चीजें कभी कभी अक्सर ऊपर होती हैं. तो वो ये कहता है कि नीचे वाली चीजें लाइफ फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, जस्ट लाइक हम सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, और ऊपर वाली जो है वो द नेक्स्ट लेवल लिविंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है. लेकिन ये कि आप ऊपर जब आप कभी घर सेट करते हो तो लोग सबसे पहले कहते हैं कि हम किचन सेट कर लें, राइट? खाना खाना जरूरी है, किचन फंक्शनिंग हो जाए. और जब तक वो नहीं होगा ऊपर that may come a little bit later, but sleep is also important to it, so there's a slight difference that I have with that. But वो ये बात करता है कि अगर आपका डाउनस्टेयर्स ऑर्डर में होगा तो आप ऊपर जा सकते हैं. अगर नीचे इतना केओस होगा कि सीढ़ियां ब्लॉक्ड हैं तो आप ऊपर कैसे जाओगे? तो जब तक आप जब तक चीजें स्टेबलाइज या और इसी तरह से इमोशन रेगुलेशन भी होती है कि और जब आप ऊपर सीढ़ियों के ऊपर खड़े होगे तो आपको नीचे हुआ केओस थोड़ा ज्यादा अच्छी तरह नजर आएगा. तो आप कह सकते हो अच्छा इसको उधर मूव कर दो थोड़ा सा, राइट? एंड दैट्स काइंड ऑफ हाउ जो आपका हायर ऑर्डर ब्रेन या जो आपका कॉर्टिकल्स मैटर्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काइंड ऑफ adds that kind of context and regulation in that way as well. तो मुझे अगर किताबों की हम बात करें तो होल ब्रेन चाइल्ड भी एक अच्छी किताब है पढ़ने की, not from the trauma but like like brain and Just to understand like the connections between behaviors and brain kind of. right. Okay, so intermission. We're back intermission. We're back from intermission. So now to kind of like translate this, because this is a lot of like neuroscience heavy content. How do we translate that into behaviors? और हम रोजमर्रा क्या देख रहे हैं लोगों के अंदर, और फिर हम उसको फिर कनेक्ट करेंगे नेशंस के साथ, हम क्या देखते हैं कि क्या होता है. I mean, और एक चीज जो मैं अगेन बार हाईलाइट आई थिंक कर रही हूँ इज बिकॉज हम हर चीज को पैथोलॉजाइज, कभी कभी ये भी क्रिटिसिज्म होता है कि आप तो हर चीज को ही पैथोलॉजाइज कर देते हैं, या हर चीज को कोई टर्म दे देते हैं, या हर चीज को कह देते हैं कि इसकी ये तो एक नॉर्मल हैपनिंग ऑफ द वर्ल्ड है. आपने तो हर चीज को ही हर चीज को ही कोई बीमारी बना दिया है. एंड आई थिंक दैट्स नॉट व्हाट we're saying is that it's serving a purpose, and it is important to label things because that then deepens conversations, that then opens up it helps you understand what's happening with you, and it helps other people. It gives you language basically, right? And it gives you language to talk about what is going on. And then on another level then आपको research funding, further exploration वगैरह सब उससे मिलती है. तो हम ये बात जो अभी तक हम बात कर रहे थे वो कहते हैं कि एक नॉर्मल ब्रेन डेवलप होगा, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि कुछ experiences होंगे जो मुझे शेप करेंगे, so that I can go on to live my full potential.
और फिर उसमें जब ट्रॉमा होता है तो वो चीजों को चेंज करता है, वो ब्रेन स्ट्रक्चर्स को चेंज करता है, वो आपके जेनेटिक एक्सप्रेशन को चेंज करता है. ऑल्सो मे बी रिकैप फॉर दोस हु टुक अ लॉन्गर देन 1 वीक इंटरमिशन. और उसके बाद जो है वो मतलब, बट ये सब कुछ हो रहा है in an effort to help you survive. Like it is to serve like a purpose. If you go into brain development and the brain functions, like it's fascinating कि how it's so हम complicated beings हैं. तो वो कितना अंदर complicated system एक साथ चल रहा है जो हमें अभी 100% समझ नहीं आया है. So maybe like 20 years later there will be even more understanding of what is happening. But basically yes, so हम ये नहीं कह रहे कि ये सब पैथोलॉजी है. अगर किसी अगर ट्रॉमा हो गया तो फॉर श्योर उसको बीमारी होगी. हम ये कह रहे हैं कि उसके फार रीचिंग और लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट्स होंगे इंसान पर और उसकी फैमिली पर और उसके एक पूरी पॉपुलेशन पे भी हो सकते हैं. And that is such a good point, because a lot of times we do pathologize, and by pathologizing, we do also demonize and then villainize people who have undergone traumatic experience. एक तो वो लेंस होता है जो हम पिटी का लेंस लेते हैं कि है बेचारा, इसने कितनी मेहनत की, आ गया, जो है बेचारा देखो किस तरह ये इतनी मेहनत कर आया है. लाइक हम लोग अक्सर औकात लाइक लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन या उसमें जो होते हैं पर्सनल स्टेटमेंट्स, अक्सर औकात जो है लोग अपने इन इस तरह की लाइफ इवेंट्स को डिस्कस करते हैं टू शो द डिस्टेंस दैट दे हैव ट्रैवल्ड. And we reward it a little bit as well, but we also discriminate against people of a certain kind when they experience trauma, क्योंकि हम नहीं चाहते. मेरे ख्याल से उसमें फिर हमें थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी कि कौन विक्टिम है और कौन ऑप्रेसर है समटाइम्स, क्योंकि हम अपने गुनाहों को अपने बीच में देखना नहीं चाहते. जो हमारे गुनाह हैं, हम उनके चेहरे इतनी आसानी से उनके लिए एम्पैथी पैदा करना या जो है, क्योंकि उस फिर हम एक बहुत से लोग, आई डोंट नो इफ यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, इज लाइक हम बहुत से ऐसे लोगों को भी पैथोलॉजाइज कर देते हैं कि यार ये पूरी कौम ही ट्रॉमेटाइज्ड है और ये थोड़ी, we don't want them amongst us. Like, we are more civilized, they're uncivilized because they're so traumatized, so let's keep them a little bit far away from us, kind of a thing. लेकिन मेरे ख्याल से उसमें जो underlying mechanism हो सकता है शायद वो ये है कि हम अपने like कोई अपने हाथ से हर कोई अपने हाथ से किए हुए जो जुल्म है उन मजलूमों, जो आपने किसी पे जुल्म किया, उस मजलूम का चेहरा नहीं देखना चाहोगे. तो मेरे ख्याल से It makes you uncomfortable. It makes you uncomfortable. So maybe we will get to it. We'll get to it because I do want to talk about a little bit about that too. Okay. So lost potential, coming back to lost potential, how it kind of translates into behavior. So we talked a little bit about reactivity. We talked a little bit about what does reactivity look like. We should also talk about what does executive functioning look like. We should talk about other things as well. रिवॉर्ड के बारे में हमने हल्की सी बात की थी कि रिवॉर्ड किस तरह बिहेवियर्स में शो कर सकता है, एक maladaptive relationship with रिवॉर्ड कैसे शो अप कर सकती है. तो coming to reactivity a little bit, would you want to say something about reactivity? What do you want to say about reactivity? you say. Like, I will talk about higher order. Like, मैं उसकी बात करूँगी. You've made me question though, like higher order उसको कहते हैं, और I'm still in my mind like stuck a little bit on that like food chain comment, but I mean language, right? No, but like you have to think about like the impact of the words that we use sometimes and that we've historically used, and it's okay to rethink things and change your mind about them and say like that maybe that wasn't correct. I mean, executive functioning, even executive, like again, yes, we do talk about it differently than reactivity or right. So yeah, thank you for keeping us on track, Manal. So reactivity, so emotional reactivity क्या होती है जब कोई भी एक this is a normal thing, right? Like अगर आप किसी चीज को आपके साथ अगर आपके साथ कुछ होता है, कोई सिचुएशन होती है या आप किसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं, तो आपका एक इमोशनल रिस्पॉन्स होता है. एक स्कूल ऑफ साइकोथेरेपी थॉट जो है वो CBT है, जिसमें एक ट्रायंगल में आपके थॉट्स और आपकी फीलिंग्स और आपके जो एक्शंस होते हैं, यू कैन सी मी दैट वर्ड, सो मे बी लाइक दिस, लाइक लिंक्ड होते हैं, राइट? तो आपके थॉट्स और आपके फीलिंग्स और आपके इमोशंस जो होते हैं वो लिंक्ड होते हैं कि इफ यू गेट अ थॉट, लाइक योर थॉट्स एंड अगेन थॉट्स, फीलिंग्स और आपके एक्शंस जो हैं वो लिंक्ड एंड बाई डायरेक्शनल एरोज के साथ. तो वो उस ट्रायंगल में बाई डायरेक्शनल एरोज नहीं होते शायद. तो
Yeah, okay. तो Yes. जब आपकी हायर इमोशनल रिएक्टिविटी होती है तो देयर कैन बी थिंग्स दैट आर you are unable to basically regulate at times, right? Like you're able to you react as if your reactions are much more are happening out of thought, out of the situation, in a much in a emphasized, in a much more pronounced way. Maybe the situation doesn't call for it. Maybe you're reacting to a situation that is not what is really happening, but you're taken back to a situation that was happening before. You're basically जब आपकी reactivity बड़ी भी होती है तो आप अपने actions के through या आपकी actions में या thinking में वो reflect भी होती है. And you're unable to sort of like clamp down on it a little bit. And ये weakness का sign नहीं है, because you are जब आपके साथ कुछ ऐसा हो जो आपकी जिंदगी बदल दे या आपकी जिंदगी को question करे, तो you kind of want to react to situations like that, right? You want to continue to live on after that. Yeah. Right, Manal, anything you want to add to that? No, I agree with what you're saying, and I do. Again, just to keep the conversation moving, I think we cannot talk about it without talking about executive functioning as well, right? Yeah. So That's why I was struggling. so I think, and you please feel free to chime in as well. And I think जब हम executive functioning की बात करते हैं, मेरे ख्याल से अक्सर औकात जब मैं ये हमारे साथ for folks that are interested in psychotherapy as well and try to find like a common ground between different forms of therapy as well. Sometimes, we have that psychoanalysis model, ego model, where we have the superego and the ego and the id kind of a thing. And a lot of times that I do see similarities between what is being said about ego, along with, and this is not ego as in, आपका जो हम बहुत ईगो है, ये वाला ईगो नहीं है, ये वाला ईगो है. यानी उधर उधर उसमें होता है कि basically I'm watering it down to the point that it doesn't, like it's not doing justice. But id के बारे में आप सोचते हो from a desires and wishes and fantasies perspective. Super ego के बारे में आप सोचते हो from an inhibitions, conscience kind of perspective. Or ego is the thing in the middle that kind of helps kind of like reconcile the conflict between the two. क्योंकि आपकी id एक चीज कहेगी, आपका super ego एक और चीज कहेगा. तो ego को जो है has to find a middle ground so that neither one feels kind of completely kind of like dismissed. तो करना पड़ता है. तो मेरे ख्याल से अक्सर औकात जो ईगो को मैं एग्जेक्टिव फंक्शनिंग के साथ भी देखती हूँ, लाइक it has to serve a similar role as well. And I think executive functioning, या हम frontal cortex की बात जब कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की, और नॉट जस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग की, हम फ्लेक्सिबल अंदाज में प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रहे हैं. तो जब एक रिएक्टिविटी है और आप रिएक्टिविटी से कुछ इनेक्टमेंट करते हो, that's different from taking a step back and kind of like observing the situation and then problem solving with a flexible kind of mindset. That's different, right? जब हम frontal cortex की बात कर रहे हैं या हम executive functioning की बात कर रहे हैं, तब हम working memory की बात कर रहे हैं, to be able to pull from different things. हम language की बात कर रहे हैं, to put things into a verbal context, ताकि आप उसको explain कर सको. What cannot be said will be enacted kind of a thing. So you say things so that you don't have to enact them. की बात कर रहे हैं. हाँ, जब हम फ्रंटल कॉर्टेक्स की बात कर रहे होते हैं तो हम फोरसाइट की बात कर रहे होते हैं. मेरे ख्याल से मेरे लिए ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है फोरसाइट के लिहाज से, क्योंकि एक स्टडी की थी और ये मेरे ख्याल से उसमें मेंशन है, द बॉडी कीप्स द स्कोर. जिन लोगों ने पढ़ी है वो किताब, उसमें बात मेंशन है कि उन्होंने एक स्टडी की बच्चों के ऊपर जो किडनैप हो गए थे और उनसे पूछा कि वो फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं. तो the concept of that, the concept of future was kind of shortened for them. They couldn't think about future. वो क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या future withhold करेगा. तो मेरे ख्याल से वो चीज़, the foresight to connect actions with consequences and then to make a decision and be able to say, okay, मैं ज़रा foresight के साथ थोड़ा सा act करूँ. मोहसिन हमीद की किताब में लिखा है, and I'm going on a tangent, कि हमारी उसमें I think मौत स्मोक में लिखा आने कि थोड़े से हमारी कंट्री के बारे में और हमारी कौम के बारे में थोड़ा सा उसको थोड़ा सा रिप्रिमांड किया और कहा कि हम लोग वो कौम है जो गोली चला देते हैं और ये नहीं सोचते कि वो गोली वापस भी तो आनी है कहीं, और तो कॉन्सिक्वेंसेज और एक्शंस और कॉन्सिक्वेंसेज को लिंक नहीं करते, क्योंकि हवाई फायरिंग तो करते हैं ना लोग, और हवाई फायरिंग से लोगों का इंतकाल भी हो जाता है. तो लाइक वो एक्शंस और वैल्यू असाइन करना कि ये चीज ये चीज बहुत
ये चीज इन इतनी अ वे वर्थ इट नहीं है, या इससे कॉन्सिक्वेंसेस पे वापस आने के बाद पे भी बात करते हैं कि इसकी आप वैल्यू असाइन करते हैं ना, जब कोई इवेंट होता है तो आपका दिमाग जो है वो उसको एक वैल्यू असाइन करता है कि अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई है, ये हमें याद रखनी है, या ये हम इसके ऊपर हम आइंदा वर्क डिफरेंटली करेंगे, या ये कि अच्छा ठीक है ये इतनी बुरी नहीं थी, वी कैन डील विद इट, या ये कि ये वी हैव टू एक्ट लाइक इन डिफरेंट वे, सो आप एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ वैल्यू असाइन करते हो, so अगर मैं ये नहीं करूंगा तो बहुत बुरी चीज हो जाएगी, सो वैल्यू असाइनमेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेस एंड प्लानिंग जो है वो आपस में लिंक्ड होती हैं इन दैट वे। या या और उसके अलावा मेरे ख्याल से so yes, so frontal cortex adds all of those like disparate thought processes into the mix. Do you want to add anything else? Like, so we've talked a little bit about problem solving. वापस न्यूरो साइंस पे आ गए हैं। नहीं नहीं so वो वाली सारी चीजें आ तो जाती एक हैं इंसान में बेसिकली, इंसान में आप कह रही थी कि इंसान में ऐसे और करेगा imagine कि विल इनएक्ट इट, मैं एक और राइट? चीज ऐड करना चाहूंगी इमेजिनेशन आई थिंक एक और चीज जो अगेन ये बॉडी कीप्स स्कोर से आती है इमेजिनेशन जो है अगेन उन्होंने एक स्टडी की और इन्होंने वॉर वेटरन्स पे स्टडी की और उनको रुशाक कार्ड्स दिखाए और रुशाक इज लाइक it's like in plots that you show to people. It's like a projective testing में यूज होता है साइकोलॉजी के अंदर साइकोलॉजी साइकेट्री के अंदर जब आप कार्ड्स दिखाते हो लोगों से पूछते हो कि अच्छा what do you make of them and what you probably are seeing is like how people think. It's not about what conclusions that they come to, but it's like how they think about things, right? And what they did with war veterans was they weren't able to think about कि उनके सामने क्या रखा हुआ है और उसके बारे में वो सोच नहीं like they were like what it's nothing kind of a thing or it's just like there wasn't any imaginative kind of faculty there. So that was another thing because imagination is what adds pleasure. Like अभी आप सोचो बिरयानी के बारे में आप मुझे नहीं पता, आज तक किया नहीं किया, मैंने नहीं किया, तो अब मैं बिरयानी के बारे में सोचूंगी। आप सोचो बिरयानी के बारे में आपको एक थोड़ा सा वैसी मजा आ जाता है राइट दैट्स योर इमेजिनेशन दैट इज योर इमेजिनेशन दैट्स एडिंग कि यार जब मैं बिरयानी खाऊंगा उसमें आलू लाइक हम कराची वाले हैं तो आलू आलू वाली स्पाइसी होगी लाइक आपकी बॉडी प्रिपेयर करना एक एक्सपेक्टेशन एक काइंड ऑफ लाइक इमेजिनेशन आ जाती है जो प्लेजर ऐड करती है लाइक टू टेक अवे समवन्स इमेजिनेशन like because of again I also see trauma as a theft of sorts a theft of potential जब आप किसी को ट्रॉमेटाइज करते हो आप उसका पोटेंशियल छीन रहे होते हो हाँ, और आप जैसे आप सॉरी अपनी बात खत्म करो। to rob them of their imagination to rob them of their foresight to rob them of a vision for future all of that is such a like more than like yes there is concrete loss that happens in the form of life there's concrete loss that sorry life or limb, right? Life limb family members houses livelihoods there is things that are stolen from you in a very kind of concrete way and there are things that are stolen from you from your mind from your potential and I think we often don't underscore the importance of that theft because that theft kind of goes on to determine the fate of people and the fate of nations. That's true. पता है आप ये बात करिए जैसे ये अब मैं नॉन मेडिसिन बात करूंगी बट आई डोंट नो इफ एनी ऑफ यू हैव वॉच्ड दैट इंटरव्यू एंजेलिना जोली का एक लाइक अवार्ड एक्सेप्टेंस स्पीच में उसने क्योंकि वो लाइक शी इज एन एक्टिविस्ट फॉर रेफ्यूजीज एज वेल तो वो उसमें उसमें उसने ये बात की थी कि मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ऐसा क्यों है कि मैं यहाँ पैदा हुई और एक बहुत अरसे बहुत डिस्टेंस अवे एक माँ है जो एक रेफ्यूजी कैंप में है वो भी अपने बच्चों से उतना ही प्यार करती है जितना मैं अपने बच्चों से प्यार करती हूँ वो भी जिंदगी के बारे में वैसे ही सोचती होगी वो शायद बेहतर फिल्में बनाए मुझसे और वो शायद मुझसे बेहतर काम करे लेकिन मैं सोचती हूँ कि वो वहाँ है और मैं यहाँ हूँ एंड यू कैन वॉच दैट होल लाइक स्पीच ऑनलाइन बट आई थिंक दैट इट्स इम्पोर्टेंट कि हम ये सोचें कभी कभी क्योंकि देर आर सम थिंग्स जो आउट ऑफ लक होती हैं और ट्रॉमा अगेन समटाइम्स एक बैड सेट ऑफ कार्ड्स है जो आपको रॉब कर लेता है उस फ्यूचर से कि आप क्या बन सकते हो आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो दुनिया की तरफ क्रिएटिविटी में क्रिएटिविटी भी राइट लाइक इट कैन लिमिट योर क्रिएटिविटी yeah creativity is also centered in your higher areas राइट हम हायर को कोटेशन में यूज करेंगे ठीक है टॉप और हायर को या
it can make you it can affect all of that. It can affect your learning. So जब जैसे एक दिन हम बात कर रहे थे कि इंसान में कैसे ये पुट होगा, तो बच्चे स्कूल में कैसे परफॉर्म करेंगे वो अफेक्ट होगा, राइट? स्टैंडर्ड, अगर हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है, बट वो टेस्ट के ऊपर, क्योंकि स्टैंडर्डाइज वो उस बच्चे के लिए तो स्टैंडर्डाइज डिफरेंट है, राइट? वो तो स्टैंडर्ड नहीं, उसके साथ उसकी जिंदगी में वो स्टैंडर्ड नहीं रहा जो जो एक दूसरे बच्चे जिसका ट्रॉमा नहीं हुआ उसके साथ, राइट? तो तो आई थिंक कि ये वो आपकी स्कूल परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी। आप जो है वो रिपोर्ट कार्ड्स के ऊपर वो रिफ्लेक्ट करेगा, बच्चा क्लास में बैठता है या नहीं बैठता, हर वक्त उठता रहता है या नहीं उठता रहता, वो कैसे कैसे रिस्पॉन्ड करता है जब टीचर उसको क्रिटिसाइज करते, मतलब क्रिटिसाइज नहीं, कंस्ट्रक्टिवली भी कुछ फीडबैक अगर आप देते हैं किसी को और कभी कभी वो लोग नहीं ले पाते, तो इट इज इम्पोर्टेंट टू थिंक अबाउट समटाइम्स के इज देयर समथिंग इन लाइक आर दे फीलिंग थ्रेटन्ड, आर दे रिएक्टिंग टू समथिंग दैट इज इन अ वे दैट हमें उसकी हिस्ट्री के बारे में भी सोचना चाहिए कि वो इंसान किस तरह से अफेक्टेड है in the past. Absolutely, absolutely. And I think the other thing that I also want to bring in, that self-narrative about someone, right? Because a lot of times kids depend upon their adults or the grown-ups in their lives to kind of provide that language for an autobiography kind of a thing, right? कि आपकी जिंदगी में पहले, और language ही है जो आपके present को आपके future और like आपके past, present और future को connect करती है, like, right? क्योंकि that's how we make sense of the world is through language a lot of times. And the language that our parents use for us, or the language that is used for us in a global context as well, like the language that is used for countries as well, and the language that is used by parents for children as well, is going to determine how we see ourselves, right? And how we develop our own narratives about ourselves. One of the things that also happens with trauma, and Judith Herman talks a little bit about, is like that kind of double identity, right? Judith Herman को quote करें, मैं Angelina Jolie को quote and they talk about, like, she talks about, like, you know, that sense of double identity or double think, or जो और लोगों का भी concept है, which is जब अगर हम सिर्फ एक बच्चे के बारे में बात करें, तो जब उसके साथ कोई ट्रॉमेटिक इवेंट होता है, और खासतौर पे वो ट्रॉमेटिक इवेंट उसके लव्ड वंस की तरफ से हुआ हो, या जिन पे वो डिपेंड करता हो फॉर देयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी काइंड ऑफ अ थिंग, लाइक फॉर एग्जांपल अ पेरेंट इज बीइंग ट्रॉमेटाइजिंग टुवर्ड्स अ चाइल्ड, the child will develop a double sense of self as well, because on one side they will say that, you know, I deserve it, I was a bad kid, and that is why this is happening to me. And on the other hand, they might also think that, you know, this is happening to me because I'm too special. This is happening to me because my parents, especially in terms of like sexual abuse, and this is a trigger warning as well, but sometimes in terms of sexual abuse, children might end up thinking that they are being chosen because the person who's victimizing them loves them too much. Like that grooming that happens along with sometimes sexual abuse will create that sense of double narrative in them, that they were chosen because they were special, or that they were too loved, and that they are bad, and this is something that they should be ashamed of, and this is a shameful act, and they caused their perpetrator to do this kind of a thing. So they develop that kind of like a cohesive sense of self, या a cohesive sense of identity form नहीं हो पाती, और वो एक cohesive sense of identity is very important for us to be able to connect with the world, and also to connect our own past with our own future kind of a thing. And that gets stolen away. And I think hamare, like, one of the reasons that I wanted to talk about, like when we were talking about whether this will translate to how we think about Pakistan, and we didn't set the stage for Pakistan this time, but we will in this video, our last video we did it, but we'll do it for Pakistan as well, because a lot of times Pakistan does not have a cohesive sense of self, right? Pakistan will, and I'm sorry, I have like a little bit of a cold situation going on. Pakistan will talk about how they sometimes identify with the Arabs, or they will identify with the Turks, or they will identify with other folks, but they wouldn't identify with themselves, because we haven't developed a cohesive sense of self, because we have and again I will get to that, what we were talking about. We were talking about whether Pakistan has experienced trauma, because a lot of times we talk about Pakistan in terms of like इस मुल्क के साथ क्या गलत है, और क्यों इस मुल्क के कौम कैसे हैं, और ये है वो है, और हम बहुत अच्छे लेंसेज के थ्रू बात करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो लेंसेज अप्लाई नहीं करते, वो सारे लेंसेज अप्लाई करते हैं जब हम रेज करते हैं क्वेश्चंस अबाउट मिलिट्रीज रोल इन पाकिस्तान की devastation, when we talk about politicians and their self-serving nature, when we talk about bureaucracy
see it. Like we can talk about like from a variety of different angles, we can talk about it, and all of those angles mean something, but we often don't talk about trauma. And I think that is also another important thing that we should be talking about. Um, and Kiran, one of the things people will say is that what traumatic events has Pakistan gone through? Do you think we have gone through, like, because I've been speaking for such a long time, do you think we I have? think actually आप बोल रही थी, मुझे याद है कि हमने पिछली वीडियो में ये रिकॉर्ड किया था, लेकिन हमने मिस कर दिया। हमने जूम आउट करने की बात की थी ना, तो अगर हम बिल्कुल जूम आउट करें तो दुनिया पूरी ओवरऑल Yeah. लाइक ट्रॉमेटिक इवेंट से गुजरी है, राइट? लाइक आई मीन there have been asteroids, like world has been destroyed, there have been volcano eruptions, like entire civilizations have been destroyed, not there have been floods, right? So एक बहुत ज्यादा trauma, like climate की वजह से, या अर्थ में जो गुजरा है, अर्थ जिसके थ्रू गुजरी है, वो ट्रॉमेटिक रहा है। एंड देन एज यू देन थोड़ा सा और जूम इन करना शुरू करते हो तो लाइक कॉन्क्वेस्ट हुई हैं, वो ट्रॉमेटिक हुई हैं। जनरल लाइक एक ऑपरेशन, पाकिस्तान एक ऑपरेशन से गुजरा है, पाकिस्तान कॉलोनाइजेशन से गुजरा है, पाकिस्तान क्या कहते हैं वो मार्शल लॉ, इस तरह की चीजों से गुजरा है, एक सेंस ऑफ अनसेफ्टी से गुजरा है, एज अ कंट्री ओवरऑल। पार्टीशन, राइट? लाइक बहुत या आई डोंट नो ये जूम क्या कर रहा है, but it's like आपको so- जूम आउट कर रहा Well, है। so it's like actually showing you कि अगर आप zoom out करें आपको ज्यादा नजर आएगा, अगर आप zoom in करें तो आपको कम नजर आएगा। So ये बहुत इंसेप्शन लेवल चीज बात है। हो रही नहीं, है। एंड देन absolutely. उसके अलावा लाइक क्या कहते हैं उसको, पाकिस्तान में फिर फ्लड आया, क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान की बहुत सारी कम्युनिटीज और एज अ होल पाकिस्तान ट्रॉमा के थ्रू गुजरा है। एयर पोल्यूशन इज और सो हाई। जब हम इसकी बात करें, इस पे मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी क्योंकि ये मेरा टॉपिक था, कि आप कम्युनिटीज, आप फिर यू कैन जूम इन फर्दर। further we can also like even उसमें भी आप हेल्पलेसनेस की बात करें, पाकिस्तान कार्बन एमिशन जो है वो लेस देन 1% है, और पाकिस्तान आई थिंक इट वाज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यूएसए दैट put it in on number 3 for the countries that are right now affected by climate change. So उसमें एक हेल्पलेसनेस है। हमने कुछ like पाकिस्तान कह सकता है कि यार मैंने तो इतना कुछ किया भी नहीं है, like and I am bearing the brunt of the like because there is that sense of loss of agency, right? अगर आप AQI वगैरह करें, हम पिछले दिनों एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है कि कितना पोल्यूशन है एयर में, लाहौर में बहुत ज्यादा है, it's very high. I think last year or the year before was rated as the most air polluted city in the world. Pakistan also is the place, I mean, it was, I think, shown in Dawn and Express Tribune that we import waste from. Yeah, we import waste. Yeah. And again, आपको zoom in करोगे तो you will be like पाकिस्तान कितना बुरा है, देखो क्या कर रहे हैं। अगर आप zoom out करोगे तो आपको उसका historical perspective वगैरह नजर आएगा कि क्यों what has set the stage for all of it to happen. And for that, like, and what we are trying to do is add trauma to the lens of how we see things in Right. how we see things in different other countries as well, kind of a thing. And नहीं यार, आप communities की बात करें, पाकिस्तान में फिर community violence within towards sectarian or religious minorities इतना है, towards kind of like sexual orientation and gender identity minorities इतना है, women की तरफ है, बच्चों की तरफ है, like there is a lot of violence that exists groups of people within Pakistan. फिर उसके अलावा provincial minority, like not minorities, they're not minorities but they're minoritized, उनकी तरफ इतना है, क्या नाम है, तो there are provincial identities जो आपको वो कर देती हैं। और अक्सर लोगों को ये बात बुरी लगेगी और ये लगती भी है जब भी हम कहते हैं, जब हम white privilege की बात करते हैं, तो white privilege जैसे ग्लोबली लेवल पे एग्जिस्ट कर सकती है या एक यूएस में एग्जिस्ट करती है, लेकिन हमें अपनी कॉन्स्ट्रक्ट्स ऑफ प्रिविलेज भी देखनी पड़ेगी, कौन सी प्रिविलेज एग्जिस्ट करती है। और उसमें अब selectively ये principles basically आप selectively apply नहीं कर सकते कि you know when they only when like if you have sometimes applying these principles truly and globally will mean that in some situations you will feel uncomfortable because you will also have had some privilege. और इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि मैं like if I name that privilege, I know we are going to get some flack for that, and I'm going to name it because we have talked about the importance of language. हमारी कंट्री में सुन्नी, मुस्लिम, मेल, पंजाबी, मिलिट्री privilege exist करती है,
और अगर हम इस चीज को डिनाई करते हैं या हम कहते हैं कि नहीं यार जो बेचारा गरीब, यस देयर इज इंटरसेक्शनैलिटी ऑफ आइडेंटिटीज एज वेल। एक क्लास प्रिविलेज एग्जिस्ट करती For sure. है, privilege exist करेगी। Yes, there is, and but there are intersectionality of identities as well. Yes, there is going to be class difference जो है वो impact करेगा कि एक for example अगर हम example लें कि एक औरत जो है वो upper class को belong करती है versus एक बंदा जो है वो बेचारा religious minority है and is working in or again lower class को belong कर रहा है या socio economically disadvantaged है। It's going to be a power differential that exists between those two, but there is an intersectionality of identities that we have to keep in mind as well as some of our identities will give us privilege and some of our identities will take privilege away from us. And at the end of the day, we have to also like, I'm also like, this is disgusting, but at the end of the day, I think we The also, human experience. it's a of human living. experience. At the end of the day, I think we also have to be like reconcile with our privilege as well. I think we should, Right. just Angelina Jolie Katie, like she has been born into a certain type of a household which has given her access to a number of opportunities, and we have to like reconcile that we were born in certain households and what do we do with that privilege, right? Right. And I think when I was I think I was recently reading कि हम जब privilege की कभी-कभी बात करते हैं तो वो privilege बहुत ज्यादा easy होता है देखना जब आप कहो कि ओ मेरे पास privilege दूसरे बंदे का I'm under privilege इसलिए क्योंकि उसको ये सारे obstacles के through गुजरना पड़ता है to reach somewhere. But एक और part of privilege होता है कि आपके पास privilege तब भी होता है जब आपको आपके लिए कोई चीज easy to attain थी, आपके पास कोई ऑब्स्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता था, एंड दैट पार्ट इज हार्डर टू सी कि व्हाट हैज सेट द स्टेज फॉर मी टू गेट टू वेयरएवर आई एम in an easier manner. And I think one of the other reasons that I think it's important to talk about is not to make people uncomfortable, but again to give language to understand context कि हम कहाँ से आए हैं. Intersectionality of identity हो सकता है आपकी एक part of your identity makes you more privileged, one part of your identity has added obstacles जैसे Manal was outlining, and also because जहाँ भी power differential exist करता है responsibility ज्यादा उस entity के पास होती है जिसके पास power ज्यादा है. Like जहाँ भी एक hierarchy exist करती है, power should, I mean ethically power, like जिस person के पास power ज्यादा है उसके पास responsibility भी ज्यादा होनी चाहिए, which I'll link back to my top of the food chain comment, which is कि अगर आपके पास power किसी भी context में ज्यादा है तो आपके पास responsibility भी ज्यादा है, तो आपको you have to be more mindful of what you're doing basically. And we'll talk about that in a different way. We talked about it like values और उसके बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे. Absolutely. And I want to add one thing, and I think after that we should say our final words and kind of like close this out as well. I think the other thing that I also wanted to, and we will do a part two because I think a lot of people will say that you just talked about trauma and you didn't talk about how to deal with trauma, how to kind of like what should be the community's response, what should be the individual's response, what should be the like just do trauma and response on that, because I do want to talk about community response to trauma. I do want to talk about being a bystander versus being an upstander. So we'll get to those conversations as well. I think for today, I also just wanted to add a little bit like अक्सर औकात मैं किसी से बात भी कर रही थी, मैं कही थी कि अक्सर औकात जब हम बहुत से हादसे देखते हैं दुनिया में, मैन मेड या नेचुरल काइंड ऑफ हादसे, तो for some it is easy for us to kind of like lend our voice to them or amplify them, because we see some of our identities being expressed. For example, like just to name things, we will say that Palestine का जो वो है गाजा है और फलस्तीन है, इसमें जो है हमारे लिए as Pakistani, sometimes it's an easier side to take, right? Because we're like, okay, our Muslim identity is kind of represented, and a lot of people do align with that, but are unable to do that for example, Afghan refugees. And we were talking about that earlier, that because उस side पे आपको अक्सर औकात जब आप oppressor या आप जब power और powerlessness को देख रहे होते हो, आप अपनी identities को represent भी होते हुए देख रहे होते हो, और कभी कभार आपके लिए victim के साथ खड़ा होना इसलिए आसान होता है क्योंकि आप अपनी कुछ identities को उनके थ्रू एक्सप्रेस होते हुए देखते हो, और कभी आपके लिए विक्टिम के लिए खड़ा होना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप अपने ऑपरेशन को उनके थ्रू एक्सप्रेस होते हुए देखते हो. जिस तरह औरतों और मर्दों के लिए में कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत बहुत से मर्द जो है
खवातीन के उसके लिए इतने अलाइज नहीं आराम से बन पाते, और औरतों के लिए वो कॉज लेना आसानी इसलिए हो जाती है क्योंकि आई कैन सी माई आइडेंटिटी बी एक्सप्रेस थ्रू ऑपरेशन ऑफ women, and I can see the identity of the victim, my identity be reflected in the victim's identity, and it's easy for me to take a stand and say गलत हो रहा है और हमें बेहतर करना है। लेकिन कभी कभार आपको अपने ऑपरेशन को भी देखना है कि जिस तरह की फॉर एग्जाम्पल क्लास में या मिलिट्री, मेरा मिलिट्री बैकग्राउंड है, कभी आपको अपने ऑपरेशन को भी एक्सप्रेस होते हुए देखना है कि मेरी आइडेंटिटी इज द आइडेंटिटी ऑफ द ऑपरेसर, और इस वक्त मुझे खड़ा होना है विक्टिम के लिए, और मुझे ऑपरेशन के साथ आइडेंटिफाई नहीं करना, अपनी ऑपरेसर में अपनी आइडेंटिटी को देखना है और उस आइडेंटिटी के अगेंस्ट खड़ा होना है फॉर द ऑपरेस्ड, लेकिन अपनी मुझे ऑपरेशन के साथ आइडेंटिफाई नहीं करना, मुझे ये नहीं करना क्योंकि मैं एक मिलिट्री बैकग्राउंड से आती हूँ, और लिहाजा मुझे मिलिट्री की मिलिट्री की हर गलत फैसले को जो है, या मिलिट्री ने जो ऑपरेशन किया उसको मिनिमाइज करना है या डिसमिस करना है या उसको जस्टिफाई करना है, नहीं। Like, I don't have to identify with the oppression. You don't have to identify with the oppression just because there is a shared identity. And I think मैं दो बातें कहूँगी in response to that. Like एक, I think sometimes it's very important to do that because you know it takes a lot of like standing up for anything requires courage, right? But अगर आप किसी के साथ आपकी shared identity है, in some ways आप या represent होते हुए देख रहे हैं, या कोई आपका दोस्त है जो कुछ कर रहा है, तो कभी कभी आपके दोस्तों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ये नहीं होती कि तुम जो भी करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। कभी कभी ये भी होती है कि आप उसके साथ बैठो और उसको कहो कि आप गलत कर रहे हो, आप ये सही नहीं है। क्योंकि आई थिंक एट द बॉटम ऑफ ऑल ऑफ इट, हमने ACAP को के बारे में बात इतनी ज्यादा नहीं की, बट इस दफा हम ACAP गए थे जो अमेरिकन अकेडमी ऑफ चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकियाट्रिस्ट की एनुअल मीटिंग पे, एंड आई एम कंप्लीटली फॉरगेटिंग द नेम ऑफ इट, बट आई थिंक जो उनके प्रेसिडेंट थे वो एक स्पीच में कह रहे थे, सॉरी नहीं नहीं, जो टर्म उन्होंने यूज की थी कि अफ्रीकन कॉन्सेप्ट है, विच इज के वी आर अबाउट आवर शेयर्ड ह्यूमैनिटी, and I think at the bottom of it is कि हम सब की एक shared humanity है, and ये कि आप बात करने में सिर्फ लड़ाई करना नहीं होता, you can also there's like there's concepts of like calling things out, there's also concepts of calling people in, like let's talk about it, let's understand, क्योंकि again the more you zoom out, the more you may be able to understand better, which is also going to serve the purpose of aligning, like अगर आप पावर डिफरेंशियल है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस तरह से फुलफिल हो सकती है। हम वैल्यूज के बारे में बात कर सकते हैं, बट इफ दैट इज योर वैल्यू, that'll help you live better by your live by your value as well. Yeah, so अक्सर औकात we talk about it with each other as well कि अगर आप मुझे किसी पे जुल्म करते हुए देखो, या if I am being unreasonable with someone, please call me in, please call me out, kind of a thing, and also call me in, kind of identify that for me, that hey, you gotta chill, you gotta back off, kind of a thing. yeah, because sorry, बोले because ये कितना बड़ा किसी के साथ आप नाइंसाफी कर रहे हो कि आप उसको जुल्म करने दे रहे हो, right, और आप ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह, अगर आप रिलीजियस टेक्स्ट में हमारे मतलब रिलीजियस टेक्स्ट में देखें तो ये बहुत रिलीजियस टेक्स्ट में एग्जिस्ट करता है कि यू टू हेल्प द ऑप्रेसर बाय स्टॉपिंग देम फ्रॉम ऑप्रेशन। अगर आप ये क्या कहते हैं उसको मीडिया, नॉट मीडिया, बट अगर आप टीवी एंड फिल्म में देखें तो एक एग्जांपल है इसकी जो मेरे ज़हन में आती है, लाइक हैरी पॉटर में डम्बलडोर एट द एंड ऑफ द फर्स्ट बुक, अगर किसी ने नहीं पढ़ी, स्पॉइलर अलर्ट, he says your words points in this, and so saying it takes a great deal of bravery to stand up to your friends, to stand up to your enemies, but it takes a great deal more to stand up to your friends, and he gives the final winning, like जो game changer या winning changing house cup जो होता है वो इस point के ऊपर base करता है। sorry, वो किसको मिलता है? Who wins? The Gryffindor? Gryffindor को ही मिलता है, लेकिन ties them up like how is that a spoiler then? Like everybody knows Gryffindor. No, the spoiler is like the statement of it, but आप generally मैं ये कह रही हूँ कि बहुत सारी फिल्म में भी ये exist करेगा, बहुत सारी जब हम फिल्में देखती हैं तो अगर आप लॉर्ड ऑफ द रिंग्स या और कोई भी फिल्म देखते हैं, डिपेंडिंग ऑन द जॉनर दैट यू लाइक अ लॉट ऑफ टाइम्स इन फिल्म इट माइट बी इजियर टू रिलेट विद यू, लाइक आप you find yourself rooting for the underdog, you find yourself rooting for the person जो like जो फाइट कर रहा है। बट ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह पे डिफरेंट तरह से, आप जो आप जॉनर फिल्म्स देख लें, आप वो देख लें, आप रिलीजियस टेक्स्ट देख लें, आप एथिकल बुक्स देख लें, आप जो आप बेसिकली whatever you like reading और whatever you like watching, बहुत जगहों पे ये वेल रिप्रेजेंटेड है एस्पेक्ट कि अगर आप किसी को, अगर आपका दोस्त भी कुछ गलत कर रहा है तो you can stop them and say like यार
ये ठीक नहीं है, call them in for a discussion. Don't be like मैं तुम्हें बताता हूँ सही क्या है. Say, or like highlight them, like when we say call out, even highlight that for them, because a lot of times when people are acting in a certain way, they might be operating through their amygdala as well, right? And you have Right. to slow things down, that hey, And give them that safe space. Like Hey. don't be like कि मैं तुमसे लड़ाई करूंगा अभी इस वक्त. Yeah. Like you can create that sense of safety as well कि हम this is my responsibility to say, I mean whatever, however you want to phrase it. और मैं इस पे एक और बात करूंगी, आज नहीं करूंगी, लेकिन एक मैंने एक बार सोचा था कि नसीहत देने के भी असूल होते हैं, राइट? हाँ. एंड वी कैन टॉक अबाउट कि नसीहत देने के क्या असूल हैं, क्योंकि अक्सर औकात हमें लगता है कि हम एडवाइस देने के लिए वेल पोजिशन्ड है, लेकिन हम कभी कभार उस वेल मीनिंग एडवाइस से डैमेज भी कर रहे होते हैं. राइट. और कभी हम सिर्फ एडवाइस देने के लिए कर रहे होते हैं कि अच्छा मैंने अपना काम कर दिया भाई, और but अपनी एक्सपर्टीज झाड़ने के लिए कर रहे होते हैं, और हाँ. अपनी वर्च्यू सिग्नलिंग के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन और इसलिए अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि where somebody is coming from, और trauma ने like bringing it back to our topic, like trauma वाली piece को understand करना important है, life experiences को understand करना important है, like what has set the stage को understand करना जरूरी है, क्योंकि आप सिर्फ किसी को कहने के लिए कुछ नहीं कह रहे होते. समझ भी आ सकती है बात. और ये एक्चुअली इस दफा एक ऐप पे भी ये 2 वर्ड्स आई रियली लाइक द आइडिया ऑफ इट कि जब हम लैंग्वेज यूज करते हैं फॉर थिंग्स, देयर इज लाइक आई थिंक आप प्रेजेंट करी थी, आपके सेशन में ये बात हुई थी कि इंटेंट और इम्पैक्ट ऑफ लैंग्वेज क्या है. आपकी इंटेंट, यू मे बी वेल इंटेंशन्ड, बट यू आल्सो हैव टू थिंक अबाउट द इम्पैक्ट of that on the person that you're talking about or talking to actually. Yeah, so intent, and hum well intended hain, our intention is to call us in. We wanted to, I mean, I think last time हमने बात की थी कि one of the reasons, one of the intentions of this also is if there's feedback that we can grow from, we can learn, like we'd want, like we are constantly in a state of motion and evolution and stuff like that. एक तो हमने फीडबैक सुनी नहीं, हमें फीडबैक मिली कि अपनी वीडियोस छोटी करें. हमने इंटरवेंशन हमने फीडबैक सुनी नहीं है, हमने इस वीडियो को लंबा होने दिया जितना. But like we will try to keep videos concise, because I know a lot of, I mean, I like the long format. I will be honest, I'm biased in the favor of long format, just because I think आप nuanced नहीं हो सकते, आप detailed नहीं हो सकते, आप specific, like बहुत अगर आप simplistic चीजें कर लेते हो तो फिर वो थोड़ी सी मिसइंटरप्रेट हो सकती हैं. अगर आप थोड़ी सी लॉन्ग फॉर्म में बात करते हैं, इसमें भी बहुत कुछ मिसइंटरप्रेट हो सकता है, सो प्लीज हमें बता दें अगर हमने कुछ बोला है ऐसा जो हम भी would want to learn. Yeah, because we want to grow. Yeah, we want to grow. अभी हम बच्चे हैं. With our shared humanity, and I'm joking. बड़े हो गए हम. बड़े हो गए हम ये इस चीज में अब हमें सब पता है, अब हमें सब पता है. नहीं, हमें सब नहीं पता. हम इतना डरते, हमें इस चीज में इतना डरते हैं, हमें सब नहीं पता. नहीं, अगर हम 6 दफा फीडबैक मांग चुके हैं, अगर हम कुछ गलत कह रहे हैं हमें पता है, और हमने 1 मिनट इसी पे वेस्ट कर दिया लास्ट में हमारा. नहीं, ये सब इम्पोर्टेंट है. हाँ, any final words or any final thoughts before we log off? No, I think give us like our hope is to like grow and like help people learn, and we'd love to learn if we wanna if we're doing something. And then I think अगर आपने ये 2 segments में देखा है तो great job, अगर आपने 1 segment में देखा है तो kudos to you. So I think but important ये है कि हम zoom. I think the good part, the interesting part of this is for me has been कि हम जब हम trauma की बात करते हैं तो हम specific चीज की बात कर रहे हैं, और हम zoom in करके बहुत ज्यादा देख सकते हैं कि brain पे और molecular level पे या genes के level पे क्या हो रहा है. और जब हम zoom out करते हैं तो हम देख सकते हैं कि populations के साथ क्या हुआ है, या evolution में evolutionarily क्या हुआ है, दुनिया के साथ क्या हुआ है. All are helpful ways of understanding what is and add context to what is when you're thinking about these things. Sometimes what's going on, to understand what's going on. Yeah, absolutely. And I think next time we'll also continue the conversation a little bit about the response that trauma kind of elicits in people. Right. Because I think that is a very important conversation as well. And then we have to at some point talk about ACAP. Yeah. We should talk about ACAP and the learnings that we brought home with us from ACAP. Yeah. The last time. Kuch to kar diye. Okay. Well, thank you so much for watching. I will stop recording and we will upload this. Thank you so much. Thank you.